Good evening and welcome to our 6th Masterclass on ShareChat Ads. In today's session, we'll unveil the brand new user interface of ShareChat Ads Platform and the new feature of the report builder. And not just this, there's more to the session today. ShareChat is in association with GroupAm commissioned a research to decipher the mindset of Indic language internet users across the country. We will share with you a few insights from the report, and we will also share a link to download the same in case you've not done it already. Our session will last for 60 minutes. First 45 minutes will be the introduction and the product presentation. And in the last 15 minutes are reserved for the Q&A. Please post your queries into the Q&A box. Introducing our speakers for today, Mr. Siddharth Malhotra and Ms. Seema Walia. Over to you, Seema. Hey भावना, thank you so much for the introduction always and welcome. स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शेयर चैट सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोगों ने अपना आपके कस्टमर फीडबैक, आप सब लोगों के फीडबैक एंड सपोर्ट से हम लोगों ने एक बहुत ही नया यूजर फ्रेंडली UI अपना बनाया है, क्रिएट किया है, जिसको आप लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली एंड वी ऑलवेज वांटेड कि हम जब भी ऐसा करें, हम एक मास्टर क्लास करेंगे एक्सटेंसिव एंड उसमें हम लोग उसको अनवेल करेंगे एंड हमारे एक्सपर्ट सिड हमारे साथ हैं हु विल एक्चुअली टेक यू थ्रू ईच स्टेप and he will explain as to how you can use the platform to your for the optimum usage. But before Sid comes in and starts, we will quickly, go through a little content and how do we partner, how do we all come together and, help out in your respective individual businesses. So before we start the presentation, मैं एक आपको हमेशा जो जिस लाइन के साथ मैं शुरू करती हूँ और मैं दोबारा आज वो बोलूंगी, that is that हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत के नंबर 1 सोशल मीडिया ऐप की, जिसका नाम है शेयरचैट। एंड अगर आप आज की डेट में डेटा देखते हैं तो 4 में से हर इंटरनेट यूजर, 4 में से एक इंटरनेट यूजर आज की डेट में ऑलरेडी शेयरचैट का यूजर है, ऑलरेडी शेयरचैट बन चुका है। सो हम लोग उस लार्ज स्केल पर एक ऐप की बात कर रहे हैं जिसका नाम है शेयरचैट, जो मेरे आपके एंड हम सबके बिजनेसेस का आज एक इंटीग्रल पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। Before we go and delve deeper into the nuances of the app and the new UI, let's understand our country a little bit, and why was there a need for an app like ShareChat to appear. So अगर आप अपनी कंट्री को देखें तो it's a large country. It's like, multiple European continents, merged together. We have about 1,600 dialects today in our country. We have 780 mother tongues. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी। तो अगर आप इस पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इंटरनेट का यूसेज इंडिया में शुरू हुआ। तो अगर आप देखें जो शुरू के कुछ 100 मिलियन यूजर्स होंगे हमारी कंट्री के, या जब हम इंडिया है, हम 10% यूजर्स हम मानते हैं, वो सभी वो यूजर्स थे जो ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज या वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से काफी प्रभावित थे। वो लोग थे जो ऑलरेडी काफी ट्रैवल करते थे, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर था, जो कि बिफोर द वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज, दे वर द वंस हु वर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग द आइडियाज बैक टू इंडिया। उन लोगों ने शुरुआत की इंटरनेट यूसेज की कंट्री में, एंड उसके हिसाब से एप्स बनने शुरू हुए, प्लेटफॉर्म्स जो बाहर से आए इंडिया में एस्टैब्लिश किए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो एप्स भी उसी तरीके से डेवलप हुई। वो उन लोगों के लिए थी जिनका प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश था, ना केवल इंटरनेट यूज करते हुए, इनफैक्ट इवन व्हाइल दे वर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वाचिंग टेलीविजन, कुछ कंटेंट देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, दे वर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इस तरीके से शुरू हुआ इंटरनेट हमारी कंट्री में। एंड बट अगर आप सेकेंड स्टेज देखें, जहां से शुरू हुआ एंड उसके बाद जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जिस तरीके से इंटरनेट का ग्रोथ हुआ हमारी कंट्री में, तो वहां से हमारी 90% ग्रोथ, ऑलमोस्ट 90% आप जो आज की डेट में आप देखते हैं जो इंटरनेट यूजर्स हैं,
वो वहां से आए एंड हम उसको भारत बोलते हैं. हम भारत क्यों बोलते हैं एंड वाई आर वी सेइंग कि दिस भारत इज सेपरेट फ्रॉम द 10% ऑफ इनिशियल इंडिया, इज बिकॉज ये वो लोग हैं जो कि इंटरनेट पे काम करना चाह रहे हैं, इंटरनेट यूज करते हैं अपने लाइफ में. अपने डे का शायद बहुत इंपॉर्टेंट एक परसेंटेज हिस्सा वो आज की डेट में इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे स्पेंड करते हैं. बट ये वो लोग हैं जो कि अपनी मदर टंग से जुड़े हुए हैं. दे आर वेरी रीजनल यूजर्स, दे आर वेरी लैंग्वेज स्पेसिफिक यूजर्स. उनको वो सब फैसिलिटीज चाहिए इंटरनेट पे जो कि 10% ऑफ इंडिया को चाहिए थी. बट सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो सब उनको अपनी अपनी मदर टंग में चाहिए. और ये एक रीजन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में वे आर कंट्री इज changing and developing, the technology is changing very fast, but everything is happening in the regional languages. Most of the apps जो कि शुरू के 10% के लिए टाइम पर भी आई हमारी कंट्री में, they want to adapt today to this 90%. ठीक है. सो हम जो अभी हम अपने आने वाली आगे की स्लाइड्स में जो हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस मोर and understand the importance of this 90% of the internet users. ये they are deeply rooted to their community. इनका internet age बहुत young है, possibly between 2 to 5 years. And like I said, they prefer regional media into everything, be it a newspaper or a television or watch a content or a series or an app. सो लाइक भावना ने इंट्रोडक्शन में बोला दैट हम लोगों ने ग्रुप एम के साथ मिलकर वी क्रिएटेड अ भारत रिपोर्ट. एंड ये भारत रिपोर्ट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आई टेल यू क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब हम लोग भारत की बात करते हैं, मैं अगर शुरू में मैंने ये फेस किया दैट व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू क्लाइंट्स और ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को लगता है दैट इंडिया मीन्स SSC A+, एंड भारत समवेयर मीन्स दैट SSC C, D, but ऐसा नहीं है. because today we need to realize that the real potential for any business today or for any organization today lies in the real Bharat. And Bharat essentially does not mean that मैं एक lower SEC की बात कर रही हूँ, या मैं एक अनएडुकेटेड इंडिया की बात कर रही हूँ, या मैं ऐसे इंडिया की बात कर रही हूँ जिसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आता. नहीं, वो ऑलरेडी इंग्लिश में एक्सपोज्ड हैं. they are well conversed with the language. The only difference is that they are deeply rooted to their community, and that is why the need for a regional language platform. Like I said, in local digital age बहुत young है. It's between 3 to 5 years, and they form the largest ecosystem of users. Now, please understand, मेरे बिजनेस, आपके बिजनेस, हम लोगों के लिए, सबके लिए ये लार्ज इकोसिस्टम ऑफ यूजर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज की डेट में भी दीज आर द पोटेंशियली अनटैप्ड मार्केट. आप किसी भी एक बिजनेस को लीजिए, आप वो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, आप बड़े से बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड इमेजिन करें, आप बड़े से बड़ा एक शॉपिंग पोर्टल फॉर एग्जांपल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट को इमेजिन करें, या आप किसी FMCG जाइंट को बात करें. उन सब ने जो शुरुआत किया वो शायद 10% यूजर्स के लिए किया. जिस तरीके से उन्होंने अपने एप्स डेवलप किए, जो अपना उन्होंने कंटेंट बनाया, वो उन्होंने 10% के लिए बनाया. बट देन वेरी सून दे रियलाइज कि उस बिजनेस में एक सीलिंग है, उसके आगे आप नहीं डेवलप कर सकते. अगर आपको एक्सपोनेंशियल मनी चाहिए, आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अर्न करना है आज की डेट में अपने बिजनेस के लिए, तो आपको उस मार्केट में जाना होगा जहां पे पोटेंशियल अनटैप्ड है. वो पोटेंशियल अनटैप्ड कहाँ है? भारत में. और भारत आपका 90%, इट्स अ ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ यूजर्स. अगर आपने उन लोगों को टैप करना है, आपको उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करनी होगी, और उनकी लैंग्वेज है उनकी रीजनल लैंग्वेज. सो अगेन एंड अगेन हम लोग बार बार ये रीआइटरेट कर रहे हैं दैट हमारे बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनटैप्ड मार्केट. देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ यूजर्स लाइंग देयर. वो यूजर्स वो हैं जो कि हर एक फैसिलिटी चाहते हैं इंटरनेट पे, हर ब्रांड को देखना चाहते हैं इंटरनेट पे, वो शॉपिंग करना चाहते हैं, वो पेमेंट्स कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ के
मैक्सिमम डिसीजंस आज की डेट में इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं, वो सारी एप्स इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कंडीशन दैट इट हैज टू बी इन देयर ओन लैंग्वेज. अगर हम देखें, so there is something called a NCCSA, which is essentially your new consumer classification system. ये एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है जिसमें हम लोग कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी की क्लासिफिकेशंस करते हैं कि कौन से कंज्यूमर किस तरीके की अफोर्डेबिलिटी या फिर स्पेंड्स, इंक्लिनेशन टू स्पेंड द मनी, या फिर लाइकलीहुड ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट किस तरीके का होगा. तो बाक नाउ हैज अडॉप्टेड एनसीसीएस. अगर आप देखें उस इंडेक्स के ऊपर, भारत इज ओवर इंडेक्स्ड ऑन एनसीसीएस ए and higher education as compared to the overall urban active internet user. So ये स्लाइड आपको बहुत इजीली, मेरे पास बहुत बार ब्रांड्स आके क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों को सिर्फ SEC A+ या SEC B को टारगेट करना है, and we need to target them. Why are we talking about Bharat? Why are we not only talking about 10% of India? This slide gives an answer to that. That if Bharat, the term Bharat essentially does not mean that I'm not talking to the NCCS A or A1 or A2. I'm talking to a highly educated, community which is deeply rooted to languages and has a high propensity to spend and buy the products. Look at this slide, it clearly shows that 59% of Bharat today prefers using online platforms to stay up to date with the latest news and events. Not only news and events, I am also talking about, the way they consume media today, the way they watch the series today, the way, they want to keep themselves updated about the global community, the things that are happening nationally, internationally, everywhere. This community is using an online service. In fact, if we look at some of the Cantor, highlights, while we were doing this study, we were doing all these research, that how social media today has emerged as the primary influencer for making buying decisions also for Bharat users. In fact, अगर हम वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट न्यूज, तो अगर हम वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें, 27% of the Bharat today is using video streaming to stay up to date for the any kind of a latest event. Like I said, 41% of Bharat today prefers net banking, ranking higher than India. इसका बहुत बड़ा impact, fortunately, unfortunately, we have been living in very COVID times, from last 2.5 years. It has directly impacted the way 90% of the Bharat has evolved and adapted to the internet revolution. The way you look at your local kirana stores, you look at, the way yoga education has come up on various platforms, the way people are going for aspirational education, teachers are taking classes, students ने digital पढ़ाई किया है. Everybody today, you can go to a market. आप market जाएं, अपने wallet के बिना आप अपने phone के basis से पूरी shopping करके आ सकते हैं, because हर कोई आज की डेट में नेट बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है. So 41% of the Bharat has already adapted to this kind of a technology. Like I said, 39% of the Bharat again prefer social media platforms. मुझे न्यूज कंज्यूम करनी है, मेरे को इवेंट्स के लिए अपडेटेड रहना है, but because I am in that age group, the Bharat today is a very youth Bharat. It's a very young Bharat. I want to stay updated on everything, but I don't want to go to a television and a print alone. I am consuming most of my information through the social media platforms. I am using them for the news consumption. Last few slides, I think काफी हम लोगों के myths बस्ट हुए होंगे.
भारत स्पेंड्स लेसर देन इंडिया. हम लोगों ने देखा परसेंटेज की भारत इज स्पेंडिंग वेरी हेविली ऑन गैजेट्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड सो ऑन. Offline still rules in Bharat? No way. Today's Bharat or the young Bharat has already moved on to social media platforms for any kind of a consumption, be it news or the international events. Are they traditional about payment methods and investments? No. Again, the myth has completely been busted because we all realize that a very large percentage of the young Bharat has already embraced the modern payment system or the digital banking or the net banking, as well as the new age investment instruments. So this is, this was all about the Bharat today. And no, I really want to tell you something. Look at the way the environment has also, changed because of this Bharat. All the apps, जितने भी platforms initial 10% of India के लिए build up किए गए, very quickly they are realizing and they are acclimatizing. वो अपने आप को उसी चीज में ढाल रहे हैं because they realize कि जो 90% भारत है वो उनसे तभी बात करेगा जब वो उनसे उनकी लैंग्वेज में जाके बात करेंगे. सो आप फर्क देखिए, एक प्लेटफॉर्म जो कि इंग्लिश स्पीकिंग यूजर बेस के लिए बना है, आज की डेट में वो अपने आप को उस चीज में एक्लामेटाइज या चेंजेस करने की कोशिश करें, वो अडेप्ट करने की कोशिश करें ताकि वो उस रीजनल यूजर से बात कर सके. दिस इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. आप आज आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे शॉपिंग करने जाते हैं, आपको सबसे ऊपर एक लाइन मिलेगी, क्या आप अमेजोन में हिंदी में शॉपिंग करना चाहेंगे. आप किसी भी एक नेटफ्लिक्स या किसी और प्लेटफॉर्म पे कंटेंट कंज्यूम करने जाते हैं, आपको शायद इंग्लिश कंटेंट से बहुत ज्यादा आपको रीजनल लैंग्वेजेस का कंटेंट मिलेगा. थिंग्स आर ऑलरेडी शिफ्टिंग, इट हैज शिफ्टेड. And keeping everything in view, while ShareChat as a platform was being launched, we were very particular कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं करेंगे जिसको हमें अडेप्ट करना है उस भारत यूजर के लिए. हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि बना है उस भारत यूजर के लिए. फ्रॉम डे वन, फॉर एग्जाम्पल, वी वर वेरी क्लियर कि इंग्लिश वुड नेवर बी अ प्रेफर्ड लैंग्वेज इन ShareChat. We have about 15-16 languages today on the platform. We were very, very clear कि हमको अडेप्ट नहीं करना है प्लेटफॉर्म, हमको प्लेटफॉर्म बनाना ही उसी यूजर के लिए है. Keeping all that in mind, we created this platform, and I would share some of the highlights is we already have 180 million plus monthly users, active users on the platform. Our creator community is extremely strong with about 32 plus million creators. 2.5 billion kind of a content is being shared, and the beauty of is this, that 75 plus million plus user generated content is already being created on a monthly basis on the platform today. Let's understand the platform a little more, and here comes my most interesting slide. And I'll tell you why this is interesting, because आपने सुना होगा मैं जब भी भारत बोल रही थी, मैं साथ में एक यंग भारत बोल रही थी, because see, we have to realize today something that, जो most of the decisions today which are being taken in any household, आप किसी भी घर की, आप किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, या तो वहां पे ऑलरेडी यंग हैं लोग जो खरीद रहे हैं, या फिर वो यूथ उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है. एंड दैट इज वेयर दिस स्लाइड कम्स इन, becomes extremely important for us today. So, before I go into other things, we have about 15 languages to choose from on the platform. Look at the bottom right of the slide, जहाँ पे age group mentioned है. 18 to 24 वो age group है, who are either taking a decision or they're heavily influencing the decision amongst their families or their peer group or their offices. 25 to 34, 35 to 44 are two age groups who have the highest spending power. 44 plus, wherein they're taking the decisions which are being influenced by the first three age groups. Now, if you look at this percentage, imagine that 95% today of my ShareChat Vasis, or the number that I'm quoting to you, belong to the first three age groups, which essentially means that if I'm saying that I'll give you 700 million, users, active users, or
or hypothetically, if I say that I give you 1000 people reach, let's say मैं आपको बोलूं मैंने आपके बिजनेस के लिए 1000 लोगों का रीच दिया, so वो 1000 लोग रैंडम नंबर नहीं है, those are not random users, those are effective users for your business. It is very important for me not only to reach an audience, it is important for me to reach an effective audience, and that is what I'm doing here. So it becomes extremely critical for any business today to reach a young Bharat through a platform which that young Bharat prefers and has already adapted to. ShareChat is the platform which actually handholds that young Bharat today through, and it helps them traverse those platform. It is helping them create that content and actually share it and consume it. Top 5 languages: Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada. We are there in all the tier cities. So tier 1, tier 2, tier 3 आप graph के through देख सकते हैं. We are extremely strong in South, closely followed by North, West, and East. On this slide, I would want to welcome my colleague and my partner, Sid. He will take you through how AI-driven personalization is further helping the audience or the users on our platform, and also he will take you through the new UI. Welcome, Sid. Over to you. Hey, thanks, Seema. These were really insightful slides. And again, I've been reading the chat as well, so I'm gonna try to kind of converse in English, because essentially we have a huge user base here, and I am right now not more fungible to be speaking in other languages, other Indian languages other than Hindi. So if at any point in time anyone thinks that there's some discomfort, I can switch to Hindi as well. When we talk about ShareChat, right, and I'll bring up a few points that Seema has already talked about, and I'm gonna try kind of talk about a little bit more about the technology piece here. Of course, Bharat is growing. Bharat has a huge young audience that has huge spending capacity, and mostly the user base, the big chunk of our user base is kind of lying into the age groups that usually affect the decisions, etc. We have built a world-class platform which is built for Bharat. And then again, while we see that we are built in Bharat, we are also going global in terms of how we are placed, how there are a lot of people who work in our company, they contribute. So there is a touch of globalization here, which is kind of joining hands to build for Bharat. When we talk about AI, right? AI, artificial intelligence, it is the most talked about topic right now. Everyone talks about AI and ML, but I just wanted to throw some light on how ShareChat works with it. Consider two friends, right? Seema and I, we are two friends. We know everything about each other. So when I talk to Seema, I don't say things that might hurt her. I won't say things that bore her, right? And the same thing Seema does for me. What AI and ML allows you to do is, AI and ML kind of allows you to react and kind of throw out the consumable content onto users in a scale. When we talk that we have a 280 million active users across the month, our AI and ML algorithms, they work tirelessly. Obviously they're programmatic, so they are learning about the users every hour. We try to surface the content that makes the best sense, the best context to the user. And that is why we see that almost every day, every user spends more than 45 minutes on the app, which is humongous, right? Even Facebook and Instagram have less session timings per user in a day, at least in India. And ShareChat has surpassed all that. That all kind of glorifies how we are leaping great things. We are going leaps and bounds, at least when AI and ML is concerned. And again, while I'm talking about surfacing content, ads are also some things that we know for a fact our users love and engage a lot with that. And also, while we are building for Bharat, again, a lot of companies out there in India are building for Bharat. How we are different is that
we are competing really hard with global organizations to bring in the best kind of ad experiences, the best kind of technology in the ad system as well, which again, ShareChat ads talks really highly of. When you talk about AI and ML, again, the content is contextual to you. ShareChat, kind of combines all AI personalization, and then there is a huge human intervention that also goes into the place. We have huge, um, numbers of moderators that said keep on reviewing content every time so that nothing obscure, kind of comes out on your screens, etc. And all those things are carried down to our they are carried on to our ShareChat ad system as well. Again, I've also been seeing in the chat a few people, although anonymous, they have given us feedback that the ads system, kind of needs a lot of changes that are necessary, and we are always open to feedback. Most of this call will, kind of target all the feedback that we have taken and how we have overhauled our whole UI UX, and how the experience on ShareChat ads has changed in the last month. I'll quickly share my screen and maybe show you, while this slide talks about the new user interface, how intuitive and mobile responsive we've become across browsers. You would have some of the old users who have been using ShareChat ads for the span of at least the last 2 months would have seen that our website, our ads platform, wasn't mobile responsive at all, and that kind of brought in a lot of uneasy experiences for our users, because on the fly, when you want to look at your campaigns, you want to pause your campaigns, you want to just check out how much spends you've made, how many conversions you've got. We weren't showing that to you at all in the most conducive manner on your mobile screens, right? And that has changed. That has completely changed now. Our campaigns have also become easy to optimize. We have created some guardrails, some checks and balances on the product that lets you, choose the right thing. We educate you on the platform itself. We have hundreds of tooltips that we have introduced across the whole platform that kind of show how a campaign can be trafficked, how you can use the targeting to your own device. And again, we have a great chat support system. I'm sure people would be saying that, okay, the chat support system kind of becomes unresponsive sometimes, and that's because रात के वक्त अपन लोग इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, because we all are based in India. But every person who sits on the back end responding to chats, we try our best to give out the best solution. If it needs some human intervention, we intervene, we get on calls, and of course we are trying to get the system also up to speed where everything that you need is available to you on your screens as well. We've also launched a newly built report builder. रिपोर्ट बिल्डर से मेरा कहने का मतलब ये है कि एनालिसिस तो आप अपने कैंपेन्स का पहले कर ही सकते थे प्लेटफॉर्म पे, बट नाउ if you want to see how 4 or 5 or a group of campaigns for you performed, what kind of dimensions, what kind of matrices do you want to keep into consideration for your reports, वो भी अब हमने available कराया है within our new report builder module. I'll quickly, so I'll talk about the ShareChat pixel. This is also very important, and I want to put some time separately for this, and I'm going to talk about the ShareChat pixel towards the end of this. But I'm going to quickly share my screen and show you what all changes we have kind of brought into our platform, what feedback we have taken from you guys, and what is it that we are changing, right? And if, again, there will be a lot of changes that you would see every 15-20 days on the platform. Right now, the login looks like this. You log into your platform. We give you access into your own personalized account, and as per your account settings, you'd be able to see आपका यूजर आईडी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है. You can change your password, your brand name and your brand profile name. You can change very quickly, and we also give you a chance to give us the best knowledge that you have as per your account, right? आप में से कुछ लोग ई कॉमर्स के बिजनेस को प्रमोट करते होंगे. ई कॉमर्स में आप अपैरल को भी प्रमोट कर सकते हैं, ऑटो व्हीकल स्पेयर पार्ट्स को कर सकते हैं, ब्यूटी, पर्सनल केयर. You are the right people who know what your business is all about, right? And that is why we don't judge your business on that part. We ask you to give us the right information, and the exhaustive list of advertiser categories that is available here only lets us know more about your business and optimize your campaigns in the perfect way.
if you look at the overview page, right, on the top of the overview page, you will see a mark which shows you on the top of the screen, on the header, and also on the overview page on the middle of your screen, you'll see how's your business profile, what is the health of your business profile. This lets us know, or this is one way of us to let you know that how complete or your business profile is. जितना ज्यादा आपका business profile towards completion होगा, उतना ज्यादा हम आपके business के बारे में better जान सकेंगे, हमारे बैक एंड सिस्टम्स उतना अच्छा आपके बिजनेस को जान सकेंगे, और उतना ही अच्छे से हम लोग आपके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, हमारे एल्गोरिदम्स भी ऑप्टिमाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे आपके बिजनेस प्रोफाइल की कंप्लीशन के मुताबिक। और जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, डे इन डे आउट आपके कॉल्स पे आ रहे हैं, आपकी चैट्स को आंसर कर पा रहे हैं, उनके लिए भी ईजी रहता है टू गैदर कॉन्टेक्स्ट what your business is about and give you customized tailor-made solutions for that. The most interesting changes that we have brought in are in our reporting and our campaign management. Overview, obviously, you will see how many impressions, clicks, spends, etc. you've made, right? But again, towards the campaign, this is the place that takes most of your time, right? आप कैंपेन सेटअप कैसे कर रहे हैं, आपकी कैंपेन के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है ऑन दिस टेबल राइट नाउ. दिस इज अ डेमो अकाउंट, सो यू वुडंट सी एनी एक्टिव कैंपेन्स, बट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल यूड बी एबल टू नो कि कौन से कैंपेन्स आपके चल रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो पॉज्ड हैं, एनेबल्ड हैं, रनिंग है, डिसेबल्ड हैं, एंडेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या वो जितना उन्हें डिलीवर करना चाहिए उससे थोड़ा आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, अंडर डिलीवर कर रहे हैं, ओवर डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके का आपका एड फॉर्मेट एसोसिएटेड है आपकी कैंपेन को, उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, व्हाट आर द डेली बजट्स दैट यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर कैंपेन्स ऑन, एंड फ्रॉम द स्टार्ट डेट टिल डेट उसने कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स, कितना स्पेंड और कितने CTR एक्यूमुलेट कर चुका है. You can also within the manage page itself you can kind of segregate or filter your campaigns on the basis of what ad formats. So फर्स्ट कीजिए, आपको सिर्फ नेटिव इनफीड डिस्प्ले कैंपेन्स को एक व्यू में देखना है, तो यू कैन सिलेक्ट अ फिल्टर ऑफ डिस्प्ले, यू कैन सिलेक्ट अ filter of video or interstitial, whatever suits you. And if you only want to see what all campaigns have ended, right, तो आप ended का एक फिल्टर लगा सकते हैं, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपकी जो campaigns end हो चुकी हैं उनने कितने impressions, click, CTR लिए, spends कितना हुआ उन पे. If you only want to see what campaigns are running and you want a quick view on what is your entire daily budget that you have allocated to the running campaigns on ShareChat, all you have to do is you have to click the filter for enabled. All the campaigns that are running will show here, and you'd be able to see how many in totality the impressions, clicks, CTR spends they have accumulated. Jumping quickly to the create campaign flow, which we have brought in humongous changes, and again, all this is coming from the kind of changes that we have brought in. What all did we do, and what all did we actually want to give out to the users as per their feedback. I'm gonna quickly go back and jump to a better account to show you more things. This is also an internal account through which we run our own ads. So don't quote numbers anywhere, but then again, I guess we want to be the most transparent with you guys and show you how the platform actually looks. I haven't been running a lot of ads in the last week or so, but then again, if I go to the last month, you'd be able to see how many impressions I've been making, what kind of spend, what kind of clicks, and then the date ranges, etc. around that. All that is very easy to see on the platform. तो अगर मुझे ये जानना है कि मैंने दिसंबर में कितना इंप्रेशन चलाया, कितने क्लिक्स मिले, कितना स्पेंड किया, क्या CTR आया मेरा, all that is available to me on a click of a button. I will see my trends, everything that is available to me on the overview. While we were talking about create campaign, let me quickly jump there. All you have to do, again, most of the things would remain same because there is a certain architecture for the ad system that we follow. But then again, to bring the best user experience, हमने कुछ चीजें यहाँ से कम कर दी हैं ताकि आपको अपने कैंपेन को एंड टू एंड बनाने में थोड़ा कम वक्त लगे. You have to start with a campaign name, a campaign title that you can identify on your managed pages. मैं इसको अभी से ट्रायल का नाम दे रहा हूँ just for demo purposes. With an objective as well. While I was talking, we have brought in hundreds and hundreds of tool tips, right? What do I mean by that is, ये आप देखेंगे जिस भी चीज के बारे में हमें आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, हमें महसूस होता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके आगे आपको ये आई बटन दिखेगा, उसके ऊपर आप हवर करेंगे तो यू विल नो मोर अबाउट व्हाट दैट फील्ड इज रिक्वायरिंग एज एन इनपुट. आप कैंपेन टाइटल में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे,
ऑब्जेक्टिव ऑन अ हाई लेवल मीन्स कि आपको अपने कैंपेन के लिए सही ऑब्जेक्टिव चूज करना है, बट अगर आप 3 ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे और देखेंगे कि उनके मतलब क्या है, तो आप अवेयरनेस में देखेंगे यूजुअली आप उन लोग को कैंपेन दिखाना चाहते हैं ताकि आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए और आपका ब्रांड रिकॉल अच्छा हो पाए. How we have tied down this, how we have tied this down to our entire experiences. अगर आपको एक brand awareness campaign चलाना है तो of course you are not deliberating a lot about how many clicks, how many conversions you are going to get. तो जैसे ही आप यहाँ पे अवेयरनेस चूज करते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको अभी जब जैसे ही आगे बढ़ूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो प्राइसिंग मॉडल है वो अपने आप ही सीपीएम सिलेक्टेड होगा. सो यू वुड बी बिडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ 1000 impressions. As soon as you move to consideration, you want people to click on your ads, know more about your platform, whatever you are advertising. Maybe you want to take them to a website where you have a blog, you want to take them to your YouTube channel and gather more conversions in terms of subscribers, या आप अपनी वेबसाइट के विजिटर्स ही ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड चूज कंसिडरेशन. एंड जैसे ही आप कंसिडरेशन चूज करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आपका कैंपेन ऑलरेडी वी विल हैव सेट इट अप ऑन अ सीपीसी ऑलरेडी फ्रॉम आवर साइड. अगेन फॉर कन्वर्जन, अगर आप अपने कैंपेन के थ्रू ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा परचेजेस, ज़्यादा लीड फॉर्म्स भरवाना चाहते हैं, या आप सिंपली इंस्टॉलेशंस चाहते हैं अपनी ऐप्स के, तो दोज आर एंड इवेंट्स एंड वी प्रोवाइड यू ऑप्टिमाइजेशन ऑन ऑल द एंड इवेंट्स. बट देन द प्रेरोगेटिव इज आप दो में से कोई एक चीज़ ज़रूर कर रहे होंगे हमारे साथ. हमें आपके एंड फनल के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम आपको एंड कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ पाए. दो तरीके हैं हमारे पास, एक शेयरचैट पिक्सल जिसके बारे में आई एम गोना टॉक मोर अबाउट व्हेन वी एंड दिस होल डेमो, और एक है एमएमपी. जब आप अपनी ऐप इंस्टॉल कैंपेन चलाते हैं तो बहुत से अपने इंडिया के अंदर एटलीस्ट वाइडली अडॉप्टेड एमएमपीज हैं, जैसे एप्स फ्लायर, एडजस्ट, ब्रांच, कुचावा, सिंगुलर. अगर आपकी ऐप में वो सब इंटीग्रेटेड है तो लाइक आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव आल्सो done strides of work there, and we have integrated internally with apps flyer, branch, Kochava, singular, adjust. We allow all the attribution links, and using those attribution links you can post back some data to us telling कि ठीक है आपकी शेयर चैट पे एक हमारे यूजर ने एक ऐड देखी, उसने क्लिक किया और इंस्टॉल कर लिया. And that makes our algorithms, our optimization techniques learn that which cohort of users are the most have the most propensity to convert for a campaign like you, for an advertiser category like you, for a campaign category, a creative type like you have uploaded. Next, you choose the ad format. We are also striving very, very hard to bring new ad formats, and you guys should be seeing new ad formats coming soon. I will not bound them with a target on timing, but then again, we are working very hard to bring new ad formats available, make them available to your dashboard. नेटिव इन फीड डिस्प्ले हमारी ट्रेंडिंग फीड्स पे, हमारी स्टैटिक फीड्स पे चलता है, जहाँ पे एक इमेज होती है. यू विल सी द प्रीव्यू राइट हियर एज वेल, राइट? दिस इज माय इमेज, the brand name and the brand logo that you have given us in your account manager that comes here, that brings in or ties down your brand to your ad very, very natively. And then the CTA, which is totally customizable, that also we'll see in some time, brings a very, very nice aesthetic value to what you want to talk about in your brand. So for demo purposes, I'm just going to go ahead and kind of create a native display campaign. जैसे मैं बोल रहा था, मैंने पिछले अपने आप देखेंगे पिछले सेटअप में मैंने कन्वर्जन किया हुआ था. अगर मैं उसे कंसिडरेशन भी कर लेता हूँ तो आपका ये जो प्राइसिंग मॉडल है वो सीपीसी प्री सिलेक्टेड रहता है, just because we wanted to cut down on a few steps that you have to take. All you have to do is give a good daily budget, whatever you think you're comfortable spending on the platform. You give that daily budget to your campaign. That makes us know that essentially this is what you want to spend. This is no way of judging how much you're going to spend. You can spend up to 15,000 or less, which is typically based on what bid you are making, right? There are hundreds and hundreds of advertisers that pour in every day onto the system, and create a kind of a bidding mechanism, create a kind of an auction into our ad system. तो जो भी एडवर्टाइजर सबसे अच्छा बिड कर रहा है फॉर द बेस्ट काइंड ऑफ यूजर दैट माइट कन्वर्ट फॉर देम, उनकी एड्स टेक प्रेसिडेंस ओवर लोअर बिड्स. So it's always necessary for an advertiser also to know what should be the bid strategy.
आप पहले 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता कैंपेन चलाइए, देखिए आपका कितना डेली बजट यूटिलाइज हो रहा है, एंड देन कीप ट्वीकिंग द your bids. I'm not saying always keep high bids. If you are able to get a particular number of budget exhaustion on say X, अगर आपका पूरा का पूरा बजट वहां पे यूटिलाइज हो रहा है तो आप X माइनस 20 पैसा करके देखिए, अगले दिन 20 पैसा पे भी हो रहा है तो और 10 पैसा कम कीजिए, उस हद तक जाइए जहां पे आपका डेली बजट कंज्यूम होना बंद हो जाता है, राइट? अब अगर आपको लगता है कि ₹2 पे आपका 15,000 में से सिर्फ 13,000 बजट कंप्लीट हो रहा है, आप 2.2 कर दीजिए उसको, एंड सी इफ 15,000 इज गेटिंग exhausted. And reverse to that, if your budget is not getting consumed on a particular bid, try increasing it, by 10 paisa, by 20 paisa, whatever you're comfortable with, and again plan your bid strategies around that. पहले हमारे पास मल्टी क्लिक्स में हम स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्टार्ट डेट, एंड डेट लेते थे, वो अभी भी अवेलेबल है टू गिव यू एज मच कस्टमाइजेबिलिटी एज पॉसिबल। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका कैंपेन इमीडिएटली स्टार्ट हो तो आपको ये फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा रन कैंपेन इमीडिएटली करेंगे तो हम इमीडिएट टाइम वहाँ पे अपने आप आपके लिए डाल देंगे। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ कैंपेन्स है जो एवरग्रीन कैंपेन्स है, ई कॉमर्स कैंपेन्स यूजुअली एवरग्रीन होती हैं, आपका वो सिर्फ आप तभी पॉज करते हैं जब आपके पास शायद आपका स्टॉक अवेलेबल नहीं होता या आपके लॉजिस्टिक्स में कुछ दिक्कत आती है। तो यू कैन ऑल्सो चूज टू रन योर कैंपेन कंटिन्यूसली एंड कीप ऑन रिफ्रेशिंग योर क्रिएटिव्स टू द कैंपेन्स just in 2 clicks, whereas if you wouldn't have selected this, आपको पहले क्लिक करना पड़ता, अपनी डेट ढूंढनी पड़ती, आप टाइम पे जाते, वहां पे आपको टाइमिंग सब सिलेक्ट करना पड़ता। For your convenience, we've changed it to run campaign immediately and run campaign continuously if you want to use that. In terms of frequency cap as well, you'll see that the screen is very less cluttered now. जितना भी क्लटर था पहले हमारी स्क्रीन्स पे, एंड आई एग्री दैट नीडेड चेंज, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ फीडबैक एंड मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस। हमने थोड़ा क्लटर कम किया है, चीज़ें ईजी करी हैं आप लोग के समझने के लिए। फ्रीक्वेंसी कैप आप कर सकते हैं ऑन बेस ऑफ मेनी 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 कंट्रोल्स, एंड कैस्केडिंग फ्रीक्वेंसी कैप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी एड एक यूजर पूरे कैंपेन ड्यूरेशन में सिर्फ 3 बार देखे, दिस इज समथिंग दैट वी पुट दैट ऑन डिफॉल्ट, आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टू द कॉन्ट्रेरी, अगर आप चाहते हैं कि एक बार एक इंप्रेशन रोज एक यूजर को दिखना ही चाहिए, तो आप इस लाइफ टाइम को डे पे भी चेंज कर सकते हैं। एंड अगेन टू दैट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं दिन में 3 ही जाए बट लाइफ टाइम में 5 से ज्यादा ना जाए, तो यू कैन जस्ट एड अ कास्केडिंग फ्रीक्वेंसी कैप एंड से कि एक दिन में 3 इंप्रेशन से ज्यादा एक यूजर को नहीं जाने चाहिए, एंड एडिशनल टू दैट योर कास्केडिंग रूल विल बी पूरे लाइफ टाइम ऑफ द कैंपेन में 5 इंप्रेशन से ज्यादा किसी भी यूजर को नहीं जाने चाहिए। सो ऑल दोज कंट्रोल्स आर स्टिल इन योर हैंड्स। यहाँ तक कैंपेन ह्यूरिस्टिक्स की बात होती है, कैंपेन बजटिंग शेड्यूलिंग की बात होती है, ऑल दैट गेट्स ओवर हियर in this very very small form. And the next portion that I'm going to show you is, which again has taken a complete overhaul, is the target audience portal. Now obviously, अगर पिछले पिछले UI से आप कंपेयर करें तो आपको बजट एंड शेड्यूल दिखना बंद हो जाता था, यू लूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू हैव सेट, राइट? बट यहाँ पे जैसे ही आप टारगेट ऑडियंस पे आते हैं, ऑल योर important all your important targeting parameters or budgets or schedules or bids that you have put to your campaign, we narrow it down to a very small screen so that you still don't lose context while trafficking the furtherance of your campaign. पहले हमारे पास जितने भी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज थी, हम वी आर स्ट्राइविंग टू मेक देम मोर एंड मोर, बट देन अगेन टारगेटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाना और यूआई को अनक्लटर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। एज, जेंडर और जियोग्राफी, लोकेशन हमने देखा है एज पर डेटा इज द मोस्ट यूज्ड, राइट? तो ऑल दोज आर अवेलेबल टू यू राइट एट द फेस। आप मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कुछ भी चूज कर सकते हैं, जिस भी तरीके की टारगेट ऑडियंस आपको लगता है आप पहुंचना चाहते हैं जिनको, एंड यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट what gender do you want to reach out to. तो मे बी आई से कि मेरे को अपनी एड्स जो हैं 18 से कम की उम्र के लोगों को नहीं दिखानी, और मेरी एड एट द सेम टाइम 34 की एज से ऊपर भी नहीं किसी को दिखे, एंड जितने भी लोग इसके अंदर लाइक कर रहे हैं वो मेल्स भी हैं। सो ऑल दैट इज अवेलेबल इन जस्ट 1 click and 2 keyboard inputs. Again, towards that point, हमारा city state पहले अलग हुआ करता था, but we have created a comprehensive list now that gives you every geography that is available to us for targeting, be it cities, states, whatever. So same, and for the sake of the demo, I have a Marathi creative at my disposal that I'm going to use. So maybe I say that I want to target people only in Maharashtra. So I just quickly search,
and everything that's related to my search pops out, right? आप महाराष्ट्र को टारगेट कर सकते हैं. And when I talk about small businesses, right, ऐसा हो सकता है आपका business सिर्फ महाराष्ट्र की big cities में available and you don't want to reach out to everyone in Maharashtra. So within the same list, you can search for Pune, you can search for Mumbai, whatever. And this comprehensive dynamic search populates the list as per your convenience. So for the sake of the demo again, I'll just go ahead with Pune, and or maybe let's hope for bigger businesses and target a state to begin with, right? आप ये देखेंगे जैसे ही आपने अपनी heuristics डाल दी हैं अपने कैंपेन की, we work hard to give you the right results, what you can expect. तो अभी तक के लिए we can only show you how much audience is available in your target group. All you have to do is click on estimate reach and we show you एक दिन के अंदर इस target audience आपके target rule के हिसाब से हमारे पास कितने लोग होते हैं, again in 7 cumulative days कितने audience होते हैं, and say because I have scheduled my campaign to run continuously, the most useful for me to see will be कि यार 30 days में मुझे कितने यूजर्स इस टारगेटिंग ग्रुप के हिसाब से मिल सकते हैं. सो ऑल दोज फोरकास्ट यू कैन सी. I'll take one quick moment to show you how advanced targeting also works. तो ये तो सब हमारी most used targeting capabilities हो गई. But again, we did not want to take away जितनी भी हमारी dynamic और close funnel targeting practices हैं, we also did not want to take that away from our users. So advanced targeting is still available to you in a non-cluttered way. पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता था, एक ड्रॉप डाउन आता था, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता था टू नो व्हाट ऑल इज अवेलेबल, बट राइट नाउ इट विल बी अवेलेबल टू यू इन अ सिंगल फॉर्म. आप यहाँ पे देखते ही जान सकते हैं कि टेलीकॉम टारगेटिंग अवेलेबल है, डिवाइस मैन्युफैक्चरर, मिनिमम डिवाइस एज, मैक्सिमम डिवाइस एज, सिटी टीयर्स, नेटवर्क स्पीड्स, डिवाइस प्राइस बकेट्स, इन मार्केट कंटेंट एफिनिटी, ऐप एफिनिटी, ये सब आपके एडवांस टारगेटिंग में अवेलेबल है. और अगर फर्स्ट कीजिए आपने इसके अंदर भी कुछ चूज किया है, तो ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट दिस, क्लोज दिस आउट, एंड जैसे आप बजट एंड शेड्यूल में देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हुए ये सब छोटा होके फिर भी आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैंपेन दिखाता रहता है, आपको बताता रहता है कि आपने अपने पिछले स्टेप में क्या क्या चूज किया. द सेम वे टारगेट ऑडियंस को भी जब आप narrow down करेंगे, we keep showing you what is the context of your effort that you have made onto the campaign already. And towards the last step, which is also very very important, जैसे सीमा भी बात कर रहे थे that we are building for Bharat, we want to talk to our users in the language that they prefer. आप क्रिएटिव लेवल पे जाएंगे तो आपको एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि हम आपको सबसे बेस्ट चीज़ दें, तो उसमें आपको क्रिएटिव लेवल पे लैंग्वेज टारगेटिंग मिल जाती है. तो just because I have targeted location as Maharashtra, my strategy could still be different. ऐसा हो सकता है कि कुछ आप YouTube एक चैनल प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ मराठी में कंटेंट बनाते हैं, तो मे बी आप अपनी क्रिएटिव की लैंग्वेज मराठी ही रखना चाहेंगे. इफ यू वांट टू रीच आउट, अब ये बिल्कुल जरूर बात है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग पीपल हो सकते हैं, कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल हो सकते हैं, तमिल, तेलुगु, it's a huge state, right? So it's imperative that people from all over India would be staying there, and their contextuality to certain languages, comfort to certain languages could also be there. So you can choose and select if you want to target your creative to everyone, to every user who is in Maharashtra besides the language, या for my particular use case क्योंकि मैं मराठी लोगों से ही अभी अपने कैंपेन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आई एम फ्री टू चूज मराठी. Because my creative is also going to talk to people in Marathi, right? Again, क्योंकि ये पोस्ट आपके ब्रांड प्रोफाइल से जाती हैं, if you think that you are not getting the right responses, or again, as per your social media strategy, you want to converse with people who are liking your ads, who are commenting on your ads, to your device you can do a disable comment, disable sharing. If you don't want people to be sharing your ads or commenting on your ads, you can click these buttons. If you want to converse with them and run as per your social media strategies, by default we enable comments and sharing on your ads as well. सिंपल चीज़ है, नाम ज़रूरी है क्योंकि आपको क्रिएटिव का नाम जब तक नहीं मालूम होगा, यहाँ पे 10 क्रिएटिव्स हो जाएंगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कौन से क्रिएटिव में जाके आपको चेंजेस करने हैं. तो obviously you will give a name to your creative that you can identify, and quickly go to the upload button and
put an image that you want to associate. अब जैसे मेरे ब्रांड का नाम शेयरचैट फॉर बिजनेस है, मेरे ब्रांड की प्रोफाइल का नाम शेयरचैट फॉर बिजनेस है, उसका लोगो ये है, तो आपको प्रीव्यू में साफ दिखता है कि मेरी ऐड कैसी दिखने वाली है. यू वुड हैव नोटिस कि थोड़ा पर्पलिश कलर में मेरी ऐड है और बाय डिफॉल्ट मैंने ब्लू CTA डाल दिया है. Towards that point also, we allow you to make as many aesthetic changes as possible because you are the owner of your brand, right? तो आप इतने इतने इंट्रिंसिक चेंजेस भी कर सकते हैं कि मेरे मेरे इस इमेज के साथ कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगेगा. You can change those colors so that it does not stick into the user's eye, यूजर को uncomfortable महसूस ना हो, क्योंकि कोई भी चीज जो अटपटी लगती है एक दूसरे के सामने देखते हुए, people try to make better combinations. So as per my best knowledge, I've made this I've made this combination of the color with my static creative. You can give captions. तो जैसे मैंने पहले कहा, मुझे मराठी इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो मैंने पहले से ही I've kept some captions ready. You can write in Marathi, and right there you will see that okay, what all captions that you provided, we show you right there on your preview. And again, जैसे मैं, अगर मेरी campaign का objective है to get more and more leads for ShareChats for business, click me is a default text that I have given, but then again you have full capability to tweak your CTAs. What do you want to tell the users? What do they want? What do you want the user to expect after they click on your ad? And since I am deriving signups from my ad, तो मैंने sign up करा करके एक action text डाला है, which is contextual to Marathi users. एंड टुवर्ड्स द एंड आई हैव टू नो कि यार जब भी कोई एक यूजर इस एड पे क्लिक करेगा क्या होना चाहिए. आई विल हैव टू गिव द URL and I'm done. We have also created devices for your own help. कई बार ऐसा होता है आप जल्दबाजी में थोड़ा गलत URL डाल देते हैं, या कभी कभी ड्यू टू सम इश्यूज ऑन योर कीबोर्ड एक्सेट्रा, human error is possible, right? So all you have to do is you just have to kind of click on your test URL button. हम एक न्यू ब्राउजर में आपका URL खोलते हैं और वहां पे अगर वो सही चीज नहीं खुलती, आपको राइट देयर पता लग जाता है कि शायद मैंने URL की एंट्री में कुछ दिक्कत या कुछ गलती करी. After all this is done, all you have to do is launch your campaign. And again, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स, भले ही हमने आपको बहुत सारे places दिए हैं where you can gather context of whatever you have done previously on the campaign, we also thought that it is necessary for you to take a last look, right? And towards the last look, whenever you go to review and launch your campaign, you will see everything that's associated to your campaign. आपने campaign title क्या रखा था, objective क्या था, format आपने क्या choose किया, budget में क्या था, targeting में क्या था और creative में क्या था, so that you give it one last look. And when you are satisfied with whatever you have trafficked, all you have to do is launch your campaign. Also giving you a few things, and when you see, right, when I launch my campaign and again a few of these things refreshed, आप ये देखेंगे कि मेरा ये campaign मेरे manager में वापस से आ गया है. And then you are seeing that it is pending approval. Pending approval का मतलब ये होता है कि हमारी जो internal teams है, they keep a very close watch on your campaigns. अगर at some point in time आपसे भी कुछ अपने campaign setup में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो हमारी टीम उसको चेक करेगी and they will get back to you so that you don't waste your money on a bad trafficking mistake. Besides that, approval is also necessary because obviously all of us are business people, we run businesses, but then there are notorious people also who come on to self-serve dashboards and try to put something which is objectionable. So we have created this approval process where anything objectionable never goes onto the ShareChat app, and आपके ब्रांड के आसपास भी वैसा कोई कंटेंट ना जाए, इसलिए अप्रूवल इज वेरी वेरी नेसेसरी आपकी ब्रांड सेफ्टी के लिए, आपके ब्रांड रिकॉल के लिए. एंड दैट इज व्हाई वी टेक वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट स्टेप्स टू प्रोवाइड द राइट अप्रूवल फ्लो. जैसे ये हमारी इंटरनल टीम्स आपका अप्रूव कर देती हैं, आपकी कैंपेन चालू हो जाएगी. विद इन 1 hour योर इंप्रेशन क्लिक्स, CTR स्पेंड नंबर्स विल कीप ऑन गेटिंग अपडेटेड हियर, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपकी कैंपेन कहीं अंडर डिलीवर तो नहीं कर रही, ओवर डिलीवर तो नहीं कर रही. Towards the last leg, I guess we were also talking about the report builder, right? तो यहाँ पे towards each campaign, right, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे कुछ campaigns हैं. Right now, if I see, I have run some campaigns to get some conversions from West Bengal. अगर आप campaign के बारे में और जानना चाहते हैं, you can directly hover here. You will see these buttons. You want to disable, you want to duplicate or clone the campaign, you want to make changes to the campaign, तो आप edit कर सकते हैं.
but I will try and show you one thing. How can you analyze your campaigns? You're already running campaigns. Taking into account this campaign started from 14 December and ended, is paused in this state. So when I'm analyzing right now, I'm showing you last week data, but going to the custom date selection, क्योंकि मुझे पता है ये campaign मैंने 14 December से चालू करी थी, I will put the same date selection and I'll be able to see कितने मैंने impressions इस campaign के against burn किए, कितने clicks मुझे मिले, कितना पैसा मैंने spend किया और कितना CTR मुझे मिला. Along with that, you will be able to see impression clicks के trends, किस दिन बढ़ा, किस दिन कम हुआ, so that you can make informed decisions of what changes you want to make to your campaign. किस trend से मेरी spending हुई, किस trend से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को reach किया. And then I also show you किस टाइप के जेंडर ने, क्या जेंडर स्प्लिट था आपके इंप्रेशंस में, क्या जेंडर स्प्लिट था आपके क्लिक्स में. ऑल डेमोग्राफिक डेटा इज अवेलेबल एट वन प्लेट इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट फैशन. एज ग्रुप डेटा में क्या स्प्लिट था अलॉन्ग इंप्रेशंस, क्लिक्स, कौन सी टॉप सिटीज थी, कौन से टॉप स्टेट्स थे जहां पे आपकी कैंपेन की डिलीवरी हुई. एंड दिस इज ऑल अबाउट डिलीवरी, बट वी ऑल्सो वांटेड टू शो यू अ लिटिल मोर details about how, what kind of people, what kind of user demographic that you guys have reached. So for this particular campaign in this date range, I'll be able to see what is the gender wise split of people that I have reached out to. What is the gender wise split of people? What is the age group wise split of people that you have reached out to? And again, towards that point, top cities and top states. कौन से cities में आपको top reach मिली, कौन से state में आपको top reach मिली. आपको state में यहाँ पे सिर्फ एक अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी campaign सिर्फ एक state के लिए चालू हुई. एंड अगेन फर्स्ट कीजिए आपके पास 10 क्रिएटिव थे इस कैंपेन में एंड आपको ये क्यूमुलेटिव व्यू तो मिल रहा है, बट यू वांट टू चेक फॉर सर्टेन क्रिएटिव्स. राइट नाउ आई हैव 2 क्रिएटिव्स. ऑल आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ फिल्टर ऑन क्रिएटिव्स एंड आई कैन सी कि क्रिएटिव 1 मेरा अच्छे से ज्यादा परफॉर्म किया या क्रिएटिव 2, सो दैट फॉर माय नेक्स्ट कैंपेन्स आई एम प्रीटी अवेयर कि मुझे किस तरीके के क्रिएटिव्स बनाने हैं, को किस वक्त किस तरह की नैरेटिव, किस तरह की टेक्स्ट नरेशन जो भी आप कैप्शन में अपने CTA में डालते हैं, that works for you. So you'd be able to make changes to that as well. And then events, जैसे अगर आप MMP या ShareChat Pixel से हमें कुछ भी information भेज रहे हैं, we don't keep it to ourselves. We believe in the most transparency. So within the events section, you will be able to see कौन से कैंपेन के अगेंस्ट हमने कितने पेज व्यूज, कितने लीड्स, बिकॉज पेज व्यू और लीड 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो मैंने अपने लिए टारगेट कर रखे हैं अपनी वेबसाइट पे. आप जितने भी इवेंट्स टारगेट करेंगे आपको वो सब दिखते रहेंगे, चाहे भले ही आप वो हमें MMP से भेज रहे हैं या आप हमें हमारे ShareChat Pixel से भेज रहे हैं. Going to the last leg before I start talking about the ShareChat Pixel is the new report builder that we have launched. अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि एक एक कैंपेन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, how can we kind of go and deep dive into each campaign performance. But sometimes when you're media planning, when you have to assign budgets to certain publishers, what you do is you want to see on a cumulative note how much has a campaign spent, etc. तो उसके लिए हमने रिपोर्ट बिल्डर बनाया. यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट जनरेटेड ऑलरेडी दिख रही होंगी. Again, to that point, you just have to go click on a new report. Again, give some name to your report that is identifiable to you. क्या डेट रेंज में आप वो रिपोर्ट चाहते हैं. तो क्योंकि मुझे पता है मैंने 14 दिसंबर से काफ़ी एड स्पेंड किया है एटलीस्ट ऑन माय ओन अकाउंट, तो मैं 14 दिसंबर से 31 दिसंबर की डेट रेंज मानिए मैं मान लेता हूँ अपने लिए. And then what all campaigns have ever given me any kind of impressions etc. कौन सी campaigns actual run करी हैं, यहाँ पे लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाती है. तो समझिए मेरे को वेस्ट बंगाल कन्वर्जन्स के बारे में जानना है, पंजाब और राजस्थान के बारे में जानना है. तो आई कैन क्विकली पुट डाउन कैंपेन फिल्टर्स. इन सब कैंपेन्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल होगा. इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम एक एक्सेल फाइल, एक CSV फाइल आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल कराएंगे, आपको उस फाइल में कितने फिल्टर्स, किस लेवल पे फिल्टर्स लगाने हैं वो भी सब आपको अवेलेबल कराते हैं हम यहाँ पे. तो मैं कैंपेन क्रिएटिव डेट लेवल पे मेरे को फिल्टर्स भी चाहिए. मेट्रिसेस जो है इंप्रेशन, क्लिक्स और स्पेंड्स जो है वो अभी के लिए हमारे पास फिक्स्ड है, बट सून वी आर गोना मेक चेंजेस टू दिस. वी आर ऑल्सो गोना इंक्लूड योर इवेंट्स इनटू योर मेट्रिसेस. And after all this, after these few clicks, after filling out this very small form, all you have to do is click on generate report. अगर कोई रिपोर्ट आपकी बहुत बड़े टाइम पीरियड की है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है. ये एक बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट मैंने जनरेट करी थी, तो फ्रॉम पेंडिंग इट शुड हैव मूव टू जनरेटेड बाय नाउ. एंड ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन
to get this report downloaded onto your local systems, and you can do anything with this report, that whatever you want to. I know there have been a lot of questions popping up, and sure, we will take all these questions towards the end. I wanted to, kind of talk about the ShareChat Pixel a little more, a little off agenda. It doesn't, comply to the overhaul that we have did onto our UI, etc. But then again, I wanted to talk about how important the ShareChat Pixel is increasingly becoming. ShareChat Pixel, first of all, I want to, uh, you know, reassure everyone here that we are not taking any data which is not relevant to ShareChat ads. ShareChat Pixel only helps you to tell us a little more about what the user is doing when they have reached onto your platform. तो अगर आपकी campaign अभी के लिए आपको एक certain performance दे रही है, as soon as you implement the ShareChat Pixel, and at least for 7 days we have collected some learning data from the pixel, you will definitely see a rise in your performances, etc. with your ShareChat Pixel being integrated. We are fully integratable. आप custom implementation कर सकते हैं Shopify के साथ. हमारे नॉलेज आर्टिकल्स आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट GTM पे, आप गूगल टैग मैनेजर्स यूज करके टैग्स अपने पुश करते हैं वेबसाइट पे, तो आप उससे भी हमारा पिक्सल पुश कर सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट. तो आपकी वेबसाइट पे कुछ भी लेटेंसीज वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं होती हैं शेयरचैट पिक्सल की वजह से. एंड देन इट ब्रिंग्स इन अ लॉट मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू what your campaigns are, how your campaigns are performing on ShareChat ads. Lets us learn programmatically about your campaigns as well, about your offerings to the users, and then makes it a win-win situation for everyone. जितना हम जान पाएंगे अपने यूजर्स के बारे में कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, उतनी अच्छी हम आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे. ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो बेस्ड completely on 100% encrypted मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डेटा. तो कोई भी इसके अंदर फिशिंग नहीं कर सकता है, कोई भी बीच में से डेटा किसी भी लेयर से नहीं उठा सकता है. तो आपके ब्रांड के बारे में जितना भी पिक्सल डेटा आपकी वेबसाइट से हमारे सर्वर्स पे आता है, दैट्स फुली सिक्योर्ड. And we also never pick up any events from your websites if at all a user is landing on your website and not landing to your website through ShareChat ads. अगर आपका गूगल सर्च से, फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे कोई भी इंसान आता है, तो ShareChat ads उसके बारे में कोई भी अपने पिक्सल से information नहीं उठाता है. We only pick up information when the traffic that is derived to your platform is through ShareChat ads. So that is the kind of assurance I wanted to kind of give to the group. Let everyone know how we are trying to make advances on the pixel. And I also want to advocate the importance of pixel. तो यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं या फ्यूचर एडवर्टाइजर्स हैं या करंट एडवर्टाइजर्स हैं जिनके पास एक वेबसाइट है और उनके पास थोड़ी सी बैंडविड्थ है उस वेबसाइट पे ये पिक्सल लगाने की, I really think pixel is the most important thing for a business to derive more and more conversions. Over to you, Seema. Thank you so much, Sid. I think what the session that you have taken us through today would help us solve a lot of questions that people had. Also, like you rightly said, chat में बहुत लोगों ने बोला that UI में changes चाहिए, वो changes हमने already करके दे दिए हैं. So now we really look forward to the feedback coming from each one of you. Please आइए use करिए हमारे नए platform को. Continually हमको feedback दीजिए, so that we can also improve better, and we can further include the changes जो आपको हमें चाहिए. Come be our business partners, and to as a welcome gesture. आप जिसको हम लोग हमारे इंडिया में बहुत फेमस चीज है कि हम जब भी किसी को अपने घर में इनवाइट करते हैं, जैसे हम आपको इनवाइट करें टू कम एंड बी शेयर चैट वासीज विद अस, हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो हम एज अ टोकन एक वेलकम जेस्चर करते हैं. एज अ वेलकम जेस्चर ऑन आवर प्लेटफॉर्म देयर आर टू थिंग्स दैट वी वुड वांट टू गिव यू. वन इज द मिनट आप साइन अप करते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस है जो सिड ने अभी आपको दिखाया. हम आप साइन अप करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टेंटली 500 रुपीज आपके वॉलेट में जाके ऐड हो जाते हैं. अब आपको ये 500 रुपीज का जो ऐड क्रेडिट है, जो वैल्यू ऐड क्रेडिट है, वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है.
नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप अपने वॉलेट के अंदर मनीज ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं 1 लाख रुपए अपने वॉलेट में इनिशियली ऐड करूंगा या मैं 50,000 रुपए ऐड करूंगा, एनी एक्स अमाउंट. द मिनट आप एक वॉलेट में अपना वैल्यू ऐड करेंगे, हम वो वैल्यू आपके लिए मैच करेंगे. सो अगेन, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपने साइन अप किया, हमने आपको 500 रुपीज के वर्थ एड क्रेडिट आपके वॉलेट में डाले. उसके बाद आपने 50,000 रुपीज का अपना वॉलेट रिचार्ज किया, हम 50,000 रुपीज आपको अपनी तरफ से देंगे. सो 2 ऑफर्स हुए, 500 रुपीज एट द टाइम ऑफ साइन अप, एंड सेकेंड इज दैट वी गिव यू 1+1 ऑफर while you recharge the wallet. ये स्कीम आपकी 28 फेब को, दैट मीन्स इस मंथ के एंड पे खत्म हो जाएगी. हो सकता है अगर हमारी कैपेसिटी उससे पहले खत्म हो तो हम ये स्कीम उससे पहले फिनिश कर दें. तो आप में से जो लोग भी साइन अप करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे पार्टनर्स बनना चाहते हैं, you are most welcome to join our family. Come and please avail both the offers. In case you have any questions related to this, if you have any confusions related to this, at the end of the session, Bhavna would share the email ID with you, which is selfserve@sharechat.co. Please इस email ID पे हमें connect करिए, and I would personally ensure that we call you up. हम आपको एक session के through लेके जाएंगे, and we would solve everything for you. Thank you for being part of our session today. Over to you, Bhavna. Thanks a lot, Siddharth and Seema, for such an insightful session. I hope everybody liked the new user interface. We actually have exceeded time, so I'll quickly run through all the questions. So Seema, the first question is for you. There's a customer who's trying to target the e-commerce clients, and he is having difficulty in conversions. So how can we assist them? Because he says that the payment gateway is still in English. Although his customers consume ads in local language, but the payment gateway is in English. So that is why he's facing an issue. So I would really request, आप जो email ID आपको हम लोगों ने दी है, आप उस email ID पे please मुझको 1-2 लाइन का mail drop कर दीजिए along with your contact details. I will get it sorted immediately by before tomorrow ends, your problem would be sorted. Perfect. So next question is for you, Sid. There's a customer who says that Google Analytics parameters can be mapped to Google Ads completely, where he can see the number of downloads of app and number of users who got registered. How can he map those parameters in our ads platform? Awesome. Great question. And again, towards this question, I guess, whoever thanks for the question, whoever asked it. But then again, within your question, you've already answered, right? It's the Google ecosystem. Google Ads, Google Analytics, they own everything, so they can talk about the data between their systems. That is why I was speaking very, very heavily on what the importance of ShareChat Pixel is. अब ShareChat Pixel हमारा एक खुद का बनाया हुआ device है, our platform, which lets you kind of map your events, and then within the ShareChat Ads platform, if at all you were able to map the pixels perfectly, you will see all those events within the ShareChat Ads portal itself. तो जैसे आप Google Ads पे चला के Google Analytics पे जैसे देखते हैं अपना डेटा, उसी हिसाब से अगर आप Pixel को implement कर लेते हैं, तो around the same lines you will be able to see what impressions, clicks, spend, CTR, etc. anyway, and you'll also be able to see what events were fired from your website, etc. If you have the ShareChat Pixel onboarded on your website. Hope that answers. Yes, that is perfect. So there's another question for you. Siddharth, if you could answer, how can I run multiple campaigns at the same time? He has multiple products and he wants to run campaigns through single account. Okay, so let me answer this question in two parts, right? If you have a single brand and you want to advertise about multiple products, it's simple. You create as many campaigns as possible, or to the same campaign add as many creatives as possible, tweak them aesthetically, change captions, etc. But then again, if you're talking about changing the complete brand, say you have one product by one brand, another product by another brand, right now the way for that is to create another ShareChat Ads account,
But then again, while we were speaking that we are, working, we are taking strides to bring out new features. We are working very, very hard on our multi-brand login system, where to one system, one ShareChat ads account, you can map multiple brands as well. But it's still a couple months away. So I'd ask you to stay tuned till then. Until then, create as many accounts as you wish to, and if you want to, you can apprise us that okay, these are my 5 accounts that I've created. We will keep you in the pipeline. As soon as we launch the multi-brand account system, we will map all your accounts to one account. Great. So there's another filmmaker who's promoting 2 separate films with us. So he's facing the same difficulty and he asked the same question. Hope this gets answered through this. So there's one question that do we have pin code targeting available with us? We do. Will be available in a couple weeks again. So what we are trying to do right now, a lot of a lot of ad system, what they do is they bring out as many functionalities as possible, and then you end up not enjoying the ripe fruit of it. We have the pin code targeting available with us. We are testing it internally. There are hundreds and hundreds of tests that we do before we launch anything out for public usage, right? So all that is in alpha stage. We are creating multiple POCs, multiple proof of concepts, and we are towards the last leg. So we are trying to improve our coverage on pin codes. There are thousands and thousands of pin code in India, right? And if we want to give you a solution to be able to target pin code, we want to ensure that the targeting is on point, right? So as soon as we get to a critical mass where our coverage is over 80%, we are going to launch this, and we are very, very near to that. We are going to launch it in a beta phase in the coming couple of weeks, and as soon as that gains coverage, it should be available across. Awesome. So, this is the first time we have a use case for you, Siddharth. So, there's somebody who is saying that my target audience query is like, if I select Maharashtra state, it covers the whole state, right? Then no need to select Mumbai specifically. And what is the outcome if I select both Maharashtra and Mumbai at the same time? So, and then how does he get the Marathi audience? So he's asking about different parameters, and it is a tricky user case for you now. No. It's very easy. It's very easy, and I hope I will be able to make it easily Simpler. understandable after I'm done answering the question, right? Yeah. So all these targeting parameters work in tandem, right? When you're talking about geography and geography alone, you are entering Maharashtra and Mumbai. When you say Maharashtra and Mumbai, the system understands users who are both in Maharashtra and Mumbai. So the kind of users you'll be able to, reach out with your campaign are only people in Mumbai, because Mumbai is a subset of Maharashtra, right? Maharashtra is a state, Mumbai is a city under Maharashtra. Say you targeted Maharashtra and Delhi, right? Maharashtra and Delhi both exist as states. So in an and condition, you will be reaching out to users who are either in Maharashtra or in Delhi. But again, towards that point, if you say Maharashtra or Bangalore, now Bangalore is a city, right? Yeah. And Maharashtra is a state. You said that I should have to reach out to users who are in Maharashtra and in Bangalore. You will find no users there, because one single person can never be in Maharashtra and in Bangalore at the same time. So these are all and or operations that you have to take care of. And then again, I have already taken this feedback multiple number of times. We are gonna make this more intuitive, as intuitive as possible as well. That being answered around the geography, when we talk about languages, right? Um, the language the language targeting on the creative that I just showed you in my demo is not just about putting some metadata or giving some information on which language this creative is in. We also use that to surface your ad only to those users who are consuming ShareChat content in Marathi language. So say you want to target a campaign to pan India, and you select a language that says Marathi, you will be reaching out to every user in India who's using the ShareChat in Marathi. So you can, break the bounds of geography with the targeting that you want to. You can break the bounds of what content consumption happens on the platform with all the targeting possibilities that we have provided you. Of course, there will be some convolution because campaign level heuristics differ a lot from creative level heuristics. So the creative only and only has a language parameter to be targeted, and the campaign has other heuristics.
And Awesome. this was an amazing question, by the way, and you could have seen I know how we excited I started was to answer having this. use So cases now. I hope you got your answer. We started having use cases, and this makes the conversation more engaging. And so we have one person who's asking for a certificate. So Siddharth, I'm interested to know, when are you launching your certification program? Pretty soon. Right now, all our effort is going into making the system better and better. And the certification system kind of becomes necessary when the entire ecosystem is used. So if you go to Google Ads, right, you get a Google Ads certification, you'd see they have thousands and thousands of inventory pieces. Google does not even show most of their ads on their Google platform, right? They are an ad network. We are also kind of jumping towards that, and all guns loaded to give competition to the likes of Google, Facebooks of the world. And that is how we are building our tech. But then again, right now, until and unless we give you a huge matter to study about, a certification doesn't even mean a lot of things. So while we are building our targeting capabilities, while we are building functionalities, when we reach that critical space where we have multiple concepts for you to learn about, we will definitely throw out a learning program as well. That again, digital marketers in India, the digital marketers in Bharat have a great brand and strategy and media acumen can utilize as feathers in their hats. So that's also unquestionably on the roadmap. It's just a little far away right now, because right now all our you know all Efforts. our targets or everything that we want to do is heavily targeted on to make the platform as susceptible as easy for you to use. So, so basically, Sid, you talked so much about Pixel, but there's one person who wants help and assistance in setting up Pixel with his Shopify. So you can write to self-serve at sharechat.co, and Seema's team will actually put you in touch with the right technical assistance for doing that, right? Do that as soon as possible. We are here to help. We have the technical teams. If no one is available, I'll personally help you, man. This is for a greater cause. If you have a running Shopify business, just Pixel is gonna do tremendous. This is gonna bring tremendous gains to you, and that is something that I want to tell the whole cohort. The one fine person who wants to implement it right now, we're happy to help. Other people who are contemplating, please don't. It's very easy. We can help you to get it wired up with your systems and give you incremental gains on your campaigns and your spends. Okay. Just to add to this, the ShareChat Pixel Masterclass is available on Masterclass Hub, whereby you'll see all the recordings of these sessions. And we've already pinged the link in the chat. Please follow there. And also do write to us in case if you have any queries. So next question, and probably the second last of the session today, is there an English UI for a marketeer not proficient in vernacular language to the interface? So The whole interface, I guess, is in English right now. English, right? We haven't gone vernacular there because we also agree that while we are building for Bharat, all digital marketers, as per their experiences with Google ads, with Facebook ads, when TikTok ads was here, everything was in English. So we also thought about your comfort, and for that sole reason, ShareChat ads, the whole ShareChat ads platform right now is available in English. Happy to take feedback if people want it available in other languages as well or not. But then again, towards this question, I guess the whole UI is in English, and uh, should be So available to you I'll while throw you a log into googly at you now. I will throw a googly at you now. I am an English speaker. I understand Hindi, but how can you help me if I want to run Tamil and Telugu campaigns? Again, not a googly at all. I have everything listed in my roadmap, Bhavna. So again, I didn't want to take this up in the current masterclass, maybe the next masterclass Okay. that we are hosting. But since you've poked me, so I'll tell you. Right. For the whole for the whole cohort, right? We are also building a huge creative suite ability where you can put in your creative assets, and we allow you to make beautiful creatives, choose the language, and more than translation, transliterate your English sentences into Hindi, Marathi,
Urdu, whatever languages you want to advertise into. Again, that is one very huge bet that we are taking, to take away some production spends from your pockets. Again, every person who wants to create amazing looking creatives, right? They spend some money. So I wanna, save that money for them. We wanna build a whole studio to create beautiful images, beautiful videos that you can use for campaigns onto ShareChat. And we will bring about that transliteration code where you can transliterate your brand narrative into various languages that we allow. So now it makes more important for you to follow us on our next session, whereby Siddharth and team will be sharing more insights on this service for you. And at the last question is for you, Seema, whereby we have a customer who says that he is looking at a managed serve option, and he wants a more collaborative influencer driven approach from from our model basically. So if you could answer. Of course, we can do that. Of course, we can go that route. That route is very much available, and we would love to share it in detail with you. Connect with me on your coordinates on the given email ID, and we will set up a call for you. Awesome. So last question again, Seema just mentioned that the 100% ad credit match is available only till the end of this month. It Yes. might expire soon if we actually exhaust the full credit quota that we have available with us. So please top up your wallets as soon as possible and maximize the benefits that you can get from us. Thanks for joining us for the session today. It was really wonderful hosting you all, and we'll come back with our next masterclass very soon. Thanks a lot. Bye-bye. So much. Bye. There's Basawa Raju in the chat. Basawa Raju, sorry, we weren't available with you to speak in Kannada. If you have any questions, please write to us. We will get someone who speaks the language to give you the answers that you're looking out for. We'll translate all the questions and send them back to you. Okay. Thank you. Okay. Bye, everyone. Bye.